Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are studying properly and taking care of your health as well as your family member. I just expect from you, children, that you all are doing your job and you are working sincerely. You have made the timetable and working accordingly. With this expectation from you all, I am going to start my video and the topic which I am going to discuss with you today is about another kind of disorder. I had discussed with you anxiety, somatoform, dissociative. So in the today video, we will definitely discuss about some of the another disorder which is related to the chapter 4. So be ready for that one. So today we will discuss about the mood disorder. Please note down this topic which we are going to discuss in your copy, children. Mood disorder. This is our topic of today. Mood disorder, it indicated from the name also somewhere a disorder which is related to the mood. Okay, कोई ऐसा disorder है जो कि किससे related है? Mood से related है. Some terms were there, children. What is the difference between mood, feeling and emotion? These are the terms which are very synonym to each other and very related to each other. Mood, feeling, emotion. So this three word, mood, feeling, emotion. Mood, feeling, emotion. See, emotion जो होते हैं ये long lasting होते हैं. Feeling is for the short duration. And mood came into the alteration. Okay. फीलिंग जो होती है कुछ समय के लिए होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है फीलिंग, और फिर चेंज होती है. मूड उसका these all terms you can understand, children, a vary in degree and the time period. Just like this, feeling का duration short होता है, then come the mood and then come the emotion. Emotion have a long duration. So they are differentiate with each other on the basis of the degree and the duration. So we are talking about the mood disorder which is related to a kind of mood. In this particular disorder, the person is having the mood swings. Mood swings होते हैं, sudden change in the mood pattern, and it was characterized into three parts. इसकी भी three categories हैं. The first one is the depression, जो आपने common, it is very common disorder nowadays, and I think you have heard it from so many articles, so many sources about the depression. आपने कई बार सुना होगा इसके बारे में. आगे बढ़ते हैं. After the depression come the mania. Mania is known as manic disorder, and depression is also known as major depressive disorder. Mania is known as manic disorder. It is just opposite to the depression. Whatever the symptoms and signs which you can see in depressive patients, the manic patients show a different kind of symptom. Manic patients, जैसे depression में the person feels sad and just different emotion is found in the mania. The person feel very happy, elated mood. तो just opposite characteristics होते हैं mania में. Then after came the bipolar. Bipolar is the third categorization of mood disorder, and bipolar disorder include both the symptoms of depression and mania. उसमें दोनों होते हैं.
Now let us understand a brief introduction about the mood disorder. So mood disorder are characterized by disturbances in mood or prolonged emotional state. The most common mood disorder is depression, which cover a variety of negative moods and behavioral changes. Depression can refer to a symptom or a disorder. In day-to-day life, we often use the term depression to refer to normal feeling after a significant loss, such as the breakup of a relationship or the failure to attain a significant goal. The main types of mood disorder include depressive, manic and bipolar. Okay, so mood disorder characterized होता है, you can define the mood disorder, disturbances in mood. Disturbances in mood is characterized by as mood disorder. What are the categorization of the mood disorder? First one is depression, another one is mania, and third one is bipolar. डिप्रेशन में को मेजर डिप्रेसिव भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज मेजर डिप्रेसिव. मेनिया, मैनिक डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर and bipolar disorder, which include the combination of depression plus mania. इसमें डिप्रेशन और मेनिया दोनों होता है. प्लीज नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नोट इट डाउन. One by one we will discuss. First we discuss about the depression. Major depressive disorder is defined as a period of depressed mood and or loss of interest or pleasure in most activity. So after making this one, let us discuss about this in detail. I hope you all have noted it down. So here first came the major depressive disorder. Major depressive disorder. What are the characteristics found in this one? The first one is defined as a period of depressed mood. इसमें it is a period of depressed mood. इसमें mood जो होता है depressed रहता है, यानी सैड मूड रहता है. ठीक है. सेकेंड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटी. लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लगता या प्लेजर नहीं लगता, खुशी नहीं होती है, खुश नहीं होते हैं कोई भी काम करने में, इंटरेस्ट भी नहीं होता. Loss of interest or pleasure in most activities. ठीक है. नेक्स्ट, together with other symptoms which may include change in body weight, it also have ये इस प्रॉब्लम के साथ और भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको डिप्रेशन होता है या जिनको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है. तो जैसे चेंज इन बॉडी वेट में चेंज आना. किस तरीके का चेंज? एदर इंक्रीज इन बॉडी वेट और एदर डिक्रीज इन बॉडी वेट. चेंज इन बॉडी वेट में चेंज आना. देन कांस्टेंट स्लीप प्रॉब्लम. स्लीप प्रॉब्लम की यहाँ बात जब भी होती है तो डजंट मीन कि द पर्सन इज अनएबल टू स्लीप. कभी कभी क्या होता है, इन सम ऑफ द केसेस द पर्सन स्लीप अ लॉट, बहुत ज्यादा सोते हैं.
तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो नहीं भी सोते, कोई पेशेंट they doesn't sleep and some of the patients sleep a lot. So constant sleep problem होती है, टायर्डनेस होती है, थकान महसूस होता है उन्हें, ठीक है, inability to think clearly, inability to think clearly, agitation means is related to the confusion, agitation यानी confusion में रहते हैं, ठीक है, greatly slowed behavior, बहुत धीरे धीरे काम करना, slowed behavior, slowed means in terms of speaking, in terms of doing something, everything will be, and thoughts of death and suicide very prominent among depressive patient, thoughts of death and suicide, thoughts of death and suicide. Please note it down, this point. This will definitely help you to make your notes and learn the things in a proper manner. So I just hope कि आपने ये points note down कर लिए होंगे. So these are the points which reflect the characteristics of a depression patient. They have a period of depressed mood, loss of interest, change in body weight, constant sleep problem, tiredness, agitation, inability to think clearly, slowed behavior, and thoughts of death and suicide. So I am rubbing the board with the hope you all have noted it down about the major depressive disorder. So children, with this symptom, I think you are able to understand about the major depressive कि क्या होता है इसमें. These are some of the few symptoms. Beyond that, there is so many description also. Now, some of the things which you have to study in this related to the depression is factors predisposing toward depression. What are the factors which are responsible for the depression? Okay, factors means what are the determinant? कौन से determinant हैं जिनकी वजह से person को depression होता है? That predispose the person toward the depression. So कुछ factors है, जैसे सबसे पहला है heredity. The first factor is heredity. Heredity भी होता है, जैसे अगर family में किसी को इस तरीके के disorder हैं तो वो उनके आने वाली पीढ़ी में भी ऐसा आता है. तो हेरिडिटी जिसे हम लोग जेनेटिक भी कह सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर, हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं डिप्रेशन के. जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन एंड बाइपोलर डिसऑर्डर. सेकेंड फैक्टर इज एज. एज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर. What about the age? For example, women are particularly at risk during young adulthood, while for men the risk is highest in early middle age. Age is also one of the factor for the depression. It has researches have been done, or it has been proven that women are more susceptible to have a depressive attacks or depressive disorder in their young adulthood, and the men having such kind of thing in their middle age, middle adulthood. Similarly, gender also play a very great factor role in determining the depression. Gender भी एक factor है for the depression. How? For example, it has been found that women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. Women को ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है. जेंडर में women are more susceptible for depressive disorder than men. और एज में women में ये यंग एडल्टहुड में जब वो होती हैं तो ये ज़्यादा देखने को मिलता है. और जब मेन के साथ क्या है, when they are in the middle adulthood, middle
एडल्ट वन, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच, और इनके अलावा हेरिडिटी, एज, जेंडर, इसके अलावा भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि नेगेटिव लाइफ इवेंट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, ये भी बहुत होते हैं। नेगेटिव लाइफ इवेंट, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स। नेक्स्ट है लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो भी एक रीजन बनता है डिप्रेशन के लिए। कोई लाइफ में कोई ऐसा इवेंट है, नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं लाइफ में, तो दैट ऑल्सो लीड टू अ डिप्रेशन एंड लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। नोट डाउन दीज फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग द major depressive disorder. I hope you all have noted it down. So we get to understand about the major depressive disorder in a very proper manner. आई जस्ट होप कि आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है, क्या फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेनिया, विच इज ऑल्सो नोन एज मैनिक डिसऑर्डर, मैनिक डिसऑर्डर और मेनिया। I told you that this is a disorder which is just opposite to the depression. Depression से just opposite होता है, where in depression where the patient is suffering from the depressed mood, sad mood, constant thinking about the negative life events, slowed behavior, inability to think clearly, okay, constant sleep problems. So just opposite इसमें होता है, they feel very euphoric, they feel very elated, they are most of the time they are happy, they suddenly start laughing also. So this is also the problem with the manic disorder. It is also a kind of deformities or disorder. Obviously the people who are suffering from this one, they are facing a big problem and unable to cope up with that one. So let us study about this one in the detail. So please note it down in your copy about the manic disorder. Mania. Another less common mood disorder is mania. People suffering from mania become euphoric, high, extremely active, excessively talkative and easily distractible. Manic episodes rarely appear by themselves. They usually alternate with depression. Such a mood disorder in which both mania and depression are alternate present is sometimes interrupted by periods of normal mood. This is known as bipolar mood disorder. Bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorder. I told you depression is known as major depressive disorder, mania is known as manic disorder. Similarly, bipolar disorder is also known as manic depressive disorder. Usually it has been found that कि जो मेनिया एपिसोड्स आते हैं अल्टरनेट प्रेजेंट होने का मतलब ये होता है कि अल्टरनेट प्रेजेंट यानी कभी डिप्रेसिव मूड हो रहा है, समटाइम मैनिया हो रहा है, समटाइम डिप्रेसिव, समटाइम, ये बहुत रेयर होता है। और जब भी ये ऐसा होता है तो उसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे तो पर्सन रिपोर्ट करता है कि हाफ ऑफ द डे उनका डिप्रेस मूड था और हाफ ऑफ द डे उन्हें मेनिया था, तो दैट इज समटाइम कंसिडर्ड टू बी द बाइपोलर मूड डिसऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेनिया को पहले अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। जैसे हमने डिप्रेशन के बारे में पॉइंट्स लिखा था, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। तो पीपल सफरिंग फ्रॉम मेनिया बिकम यूफोरिक, यूफोरिक हो जाते हैं। यूफोरिक यू नो एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस। सेकेंड, एक्सट्रीमली एक्टिव,
बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, एक्सट्रीमली एक्टिव। जहां जस्ट डिप्रेशन में द पर्सन बहुत ही इनएक्टिव वे में होता है, स्लोड बिहेवियर शो कर रहा है, यहाँ पे बहुत हाई बिहेवियर और एक्टिव बिहेवियर शो करता है। एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बोलते हैं, you are unable to stop them to talk, excessively talkative, excessively talkative। then easily distractible, बहुत जल्दी distract हो जाते हैं, they are unable to focus on anything for a longer duration, they are having a lack of vigilance, lack of sustained attention, so easily distractible, बहुत जल्दी distract हो जाते हैं, easily distractible। ठीक है, so these are the points which describe the about the mania. Note down these points in your topic. Euphoric means happiness, extremely happy, extremely happy, extremely active, excessively talkative, easily distractive। I hope you all have written it down. So I think you have understand about the major depressive disorder, depression, and you have understand about the mania. Now moving toward the third categorization, which is the bipolar disorder. Bipolar disorder. This is the third categorization of mood disorder. Bipolar disorder. This disorder is also known as manic depressive disorder, manic depressive। ओके, इस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बिकॉज इन दिस डिसऑर्डर both the episodes are alternatively present. Both the episode means manic episode and the depressive episode, both are present in the person alternately. Like one of the case I want to discuss with you, there was a person, it was a real case which I am telling you right now, who is working in an army. It's not related to their his profession, but he is facing this problem. He told me that ma'am, since morning up to the 12 o'clock I was feeling depressive moods. I doesn't like anything. I have a loss of interest in any kind of activity, but after the 12 p.m. I get very happy. I want to interact with my friend, so I am just behaving just opposite. So I don't know what is happening to me. So the person is diagnosed with the bipolar mood disorder. So ये episode जो होता है, such a mood disorder in which both mania and depression are alternately present and is sometime interrupted by periods of normal mood. कभी कभी normal mood भी आता है. This is known as bipolar mood disorder. It was referred to as manic depressive disorder. Okay. So I hope I had cleared with you all the three categorization of the mood disorder. तीनों ही categorization आपको मैंने समझा दी हैं अच्छे से और आपको टॉपिक I think समझ में आ गया होगा. Among the mood disorder, the lifetime risk of a suicide attempt is highest in case of bipolar mood disorder. Suicide attempt का जो केस होता है वो bipolar के साथ सबसे ज़्यादा होता है. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यू कैन सी दैट द की नोट है कि सुसाइड अटेम्प्ट इज एट द हाईएस्ट, सुसाइड अटेम्प्ट
जो होता है इसकी केसेस इसके हाई होते हैं इन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. Several risk factor in addition to the mental health status of a person predict several risk factor. बहुत सारे risk factor होते हैं in addition to the mental health status of a person predict the likelihood of suicide. These include age, gender, ethnicity or race and recent occurrence of serious life event. इसमें भी जो रिस्क फैक्टर्स होता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का, द फैक्टर्स विच प्री डिस्पोज टुवर्ड इट, तो इसमें भी एज है, जेंडर है, रेस यानी उनका कास्ट और उनका रिलीजन, ठीक है, नेगेटिव लाइफ इवेंट, ऑलमोस्ट जो भी फैक्टर्स हैं वो सभी में प्रिवेल करते हैं बच्चों. ये फैक्टर्स आपने डिप्रेशन में भी पढ़े थे, तो ये फैक्टर सभी में ही आएंगे. एज, जेंडर, रेस, नेगेटिव लाइफ इवेंट, ये सभी में ही आएंगे. ये फैक्टर्स प्रीडिस्पोज करते हैं पर्सन को टुवर्ड डिप्रेशन और टुवर्ड मेनिया और टुवर्ड बाइपोलर मूड डिसऑर्डर. टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट आर एज मच एट हाई रिस्क फॉर सुसाइड एंड दोज हु आर ओवर 70 years. सो एज में आप ये जान लो जो टीनेजर्स होते हैं या यंग एडल्ट होते हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क पे होते हैं सुसाइड के, और जो 70 ईयर्स से अबव होते हैं. जेंडर इज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, जैसे कि मेन हैव अ हाई रेट ऑफ कंटेम्पलेटेड सुसाइड देन द वुमेन. अदर फैक्टर दैट अफेक्ट सुसाइड रेट इन कल्चर एटीट्यूड टुवर्ड सुसाइड, जैसे कि इन जापान सुसाइड इज द कल्चरली अप्रोप्रिएट वे to deal with feeling of shame and distress. अगर shame की फीलिंग हो रही है या डिसग्रेस की फीलिंग आ रही है, उनको डिसग्रेस किया जा रहा है, डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो उनके लिए जापान में ये अप्रोप्रिएट है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दे कैन कमिट अ सुसाइड. तो यू कैन सी चिल्ड्रन कि कल्चरली ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ सुसाइड इज ऑल्सो चेंजिंग with the change in the culture. So I hope you are understanding what I am trying to explain to you. What are the factors which predispose these disorder: age, gender, and race and culture. Then negative expectations, hopelessness, setting unrealistically high standard. Negative expectation आप जब किसी से रखते हैं, hopelessness है, setting unrealistic high standard, being overcritical in self-evaluation are important theme for those who have suicidal preoccupation. ठीक है, so ये कुछ फैक्टर है जिससे कि which determine the suicidal tendency. I'm going to rub it and giving you some points related to the suicide. बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चों मूड डिसऑर्डर में आपको मूड डिसऑर्डर क्या होता है ये तो आप बताओगे, साथ ही साथ आप ये बताओगे कि what are the categorization of the mood disorder. That also you discuss about depression, about mania, about bipolar. Then suicide के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है डिटेल में. तो सुसाइड के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स प्रीडिस्पोजिंग टू सुसाइड, ये आप नोट डाउन कर लो. फैक्टर्स predisposing to suicide. Factors predisposing to suicide. The first is age. In age I told you कि teenager जो होते हैं, teenagers और young adults, okay? टीनेजर्स और यंग एडल्ट जो होते हैं, सो टीनेजर्स और यंग एडल्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है. और हाई रिस्क पे होते हैं टीनेजर्स और यंग एडल्ट, और जो 70 ईयर्स से अबव होते हैं, 70 ईयर्स अबव. देन अदर रिस्क फैक्टर होता है, वो होता है जेंडर. जेंडर में मेन जो होते हैं वो हाई रेट में होते हैं,
then the woman, then woman. So I hope whatever the things I had discussed with you children, you understand it. And still if you find any doubt, this topic I will continue in the next video. Again I will start it with the suicide, then we start any other topic. Up to this I had covered, and I just hope you have understand it. So this is for all today. Thank you so much for carefully listening to me.